Today we will discuss about aneurysms. What are aneurysm? Aneurysm are the dilation of or the swelling of the arteries. Okay, so it is the bulging or dilation formed at the weakened point of an arteries. जहाँ पे आर्टरी वीक हो जाती है वहाँ पे जो डायलेटेशन हो जाता है वो हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर ऑफ ब्लड. बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है ब्लड हाइपरटेंशन के केसेस पे, तो उस टाइम पे वो वेसल जो होएगी, जो आर्टरी होएगी, वो थोड़ी डायलेट हो जाएगी ताकि एक्सेसिव ब्लड है जो फ्लो हो जाए. लेकिन दिस इज़ एन एबनॉर्मेलिटी. ठीक है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से फ़्लो जो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और वो जो फ़्लो की वजह से जो डिक्रीज फ्लो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है अंदर आर्टरी के, दैट विल लीड टू द फोर्स टू डायलेट द artery. ठीक है, the artery of an the diameter of an artery can often be increased by 50%. मतलब for example if the artery has a diameter of 10 centimeter, तो its 15% may be increased, मतलब it may become 15 centimeters. ठीक है, उतना inflate हो सकता है, उतना dilate हो सकता है. ठीक है, then anything that weakens the artery wall or causes the loss of elasticity may lead to the aneurysm. So risk factors of aneurysm are, most important is the atherosclerosis. Atherosclerosis is the plaque formation in the artery which can lead to the dilatation or dilation. Then second is hypertension. As I have already discussed कि जितना ज़्यादा pressure होगा blood का, that will lead to the dilation of the artery. Then these all, smoking, trauma, congenital abnormalities, hereditary, these all may cause the blockage in the or occlusion in the arteries or the vasoconstriction. ठीक है, because of that जो the pressure inside the artery will increase, और अगर arterial wall is weak then it will lead to the dilation of the artery. Okay, then aneurysm can be in any part of the body. मतलब कोई भी जो artery है वो involve हो सकती है, but the most commonly affected is abdominal aorta. ठीक है, abdominal aortic aneurysms are often silent if less than 4 centimeter. अगर 4 centimeter से कम का dilation है तो usually there will not be much symptoms arise नहीं होंगे, silent होगा, पता नहीं चलेगा. But if the size goes above 4 centimeters then it will lead to the symptoms. So we will mainly focus about the aortic aneurysms. उसमें we will discuss both thoracic as well as the एब्डोमिनल. ठीक है, हम कहीं भी किसी भी आर्टरी में हो सकते हैं एनेरिज्म, बट वी विल फोकस ऑन द thoracic as well as the abdominal aortic aneurysm, जो aorta के aneurysms है. बाकी these are similar for entire arteries of the body. ठीक है, then men older than 50 years are at the most risk for to death because of the abdominal aortic aneurysms. तो types on the basis of means how it looks और how it happens. ठीक है, कैसे किस तरह का डायलेशन हो रहा है, that comes in the types of aneurysm. दूसरा जो मैंने आपको बोला कि बाकी इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑल्सो. लोकेशन की वजह से जो होगा वो होगा जो कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व है. आयोटा इन्वॉल्व है तो आयोटिक एनेरिज्म है, वो थोरेसिक रीजन में इन्वॉल्व है तो थोरेसिक आयोटिक है. दैट अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द एनेरिज्म वी कैन से. बट these types are कि कैसा है एनेरिज्म, हाउ इट लुक्स. ठीक है, सो सेकुलर, as you can see in this image, the first vessel which is showing the normal vessel, उसमें कोई भी aneurysm नहीं है, but the second is showing the secular aneurysms, जो जिसमें क्या होगा, towards one side the artery is, the aorta or artery is dilated. ठीक है, so as it was in this slide, secular. ठीक है, it involves the bulging on the only one side of the arterial wall.
Then next type is the fusiform. Fusiform में the entire circumference of a artery is involved. In the next slide we will see the images together, but try to understand. ठीक है. Then mycotic, in which there is a small aneurysm which is located to the localized infections. This occurs because of the localized infection. Then dissecting aneurysm. In this जो arterial wall है उसकी जो सबसे inner intimal layer है that will get rupture, और because of that rupture और because of that damage जो blood है वो artery से कहाँ चले जाएगा, will cross the intimal layer जहाँ से damage है, but the other layers of the arterial wall are intact. So the blood will not go out of the artery, but it will be collected in the between the intimal layer and the middle layer, the other layer. ठीक है. उन दोनों के बीच में एक चेम्बर बना देगा that will cause the dilation. ठीक है. अब हम images में we can see first is the normal vessel, second is the secular जिसमें towards one side जो dilation is occurring or bulging is there, and next diagram C is the fusiform where the entire circumference of the artery is involved. ठीक है. Then D is the false aneurysm. इसमें क्या हो रहा है, the arterial wall is damaged toward one side. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वॉल है वो रप्चर हो गया, उसकी वजह से ब्लड इज़ कमिंग आउट ऑफ द आर्टरी एंड इट इज़ बिकमिंग अ हेमेटोमा. ठीक है. एक्स्ट्रा कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ गया है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज़ फॉर्मिंग अ हेमेटोमा. दिस विल लीड टू द माइकोटिक दिस एनेरिज्म, जिसमें कि हेमेटोमा है तो वहाँ देर में बी द इन्फेक्शंस एंड दैट विल लीड टू द माइकोटिक एनेरिज्म. बट द डायग्राम इज शोइंग द डाइसेक्टिंग. यहाँ पे देखो इट इज़ वेरी क्लियर कि सिर्फ वन ऑफ द लेयर दैट द इंटीमल लेयर में ही सिर्फ डैमेज हुआ है, टीयर हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड आर्टरी से निकल के उस एरिया में जा रहा है, लेकिन the medial and the outer layer of the arterial wall is intact. तो इसलिए ब्लड जो है वो बाहर नहीं जा रहा, उसके अंदर ही इकट्ठा हो रहा है. दिस इज़ नोन एज डाइसेक्टिंग एनेरिज्म. देन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी कैन से इफ़ देयर इज़ aortic aneurysm in the thoracic cavity, so then it is known as thoracic aortic aneurysm. So 85% of total thoracic aortic aneurysm are caused because of the atherosclerosis, that is plaque formation. Okay, then it occurs most frequently in men between the age of 40 to 70 years, and thoracic area is the most common site for dissecting aneurysms. ठीक है. Then clinical manifestations, these vary depending upon the means how rapidly the aneurysms are dilating. ठीक है. कितनी जल्दी जो वेसल्स है वो जो आर्टरी है वो डायलेट हो रही है, एंड कितना ज़्यादा पल्सेटिंग मास इज फेल्ट अराउंड द इंट्राथोरेसिक स्ट्रक्चर्स. क्योंकि ये डायलेशन हो जाता है तो ये बाहर जब हम व्हेन वी पाल्पेट इट कम्स एज अ पल्सेटिंग मास. ठीक है. ऐसा फील होता है. तो सम पेशेंट में भी asymptomatic, लेकिन अगर if there are symptoms then there may be the constant pain, and which will be occurring when the patient will lie in the supine position. क्योंकि जैसे ही patient supine position में लेटेगा, so this dilation हुआ है तो heaviness है, that will cause pressure on the chest, so it pressure inside the chest, so that will lead to the constant pain. Then dyspnea may occur because of the pressure of this sac against the trachea and the main bronchus or lung. जो अभी मैंने बोला कि because of that dilating artery वो aorta वो heavy हो जाएगा, and this heavy sac will cause pressure on the trachea as well as the bronchi or the main bronchus or lung, so this will lead to dyspnea. Then cough, hoarseness of voice or stridor or weakness or complete loss of
voice, which is known as aphonia, and dysphagia may be because of the impairment of esophagus by aneurysm. तो इसमें मेनली क्या होगा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रेशर exerted inside the chest, there will be cough, then hoarseness of voice will be there. Stridor is a high pitched whistling sound. ठीक है, जब ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो हाई पिच्ड विसल साउंड आता है, दैट इज नोन एज स्ट्राइडर. ठीक है, देन एफोनिया एंड डिस्फेजिया में बी देयर. Then assessment and diagnostic evaluation for thoracic aortic aneurysm. If the large arteries are involved, or the large arteries got aneurysm, then the superficial veins of the chest will become dilated and edema of the chest wall will be there, and it will lead to cyanosis. क्योंकि blood circulation अगर जो what the superficial veins हैं वो डायलेट हो गया, एडिमा हो गया, दैट विल लीड टू द साइनोसिस, क्योंकि इट विल लीड टू डिस्निया, एंड डिस्निया अगर होगा तो हमारा जो हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से साइनोसिस will be appearing. Then the imaging tests will be including the chest x-ray, CT scan, and transesophageal echocardiography can be done. इसमें the endoscope is inserted from the esophageal route. Then medical management, in this we have to go for the surgical repair. ठीक है, सर्जिकली भी क्या करेंगे, जो वो डायलेशन हो रखी है उसको रिपेयर करेंगे, और वहाँ पे उसको जो वेसल की कॉन्टिन्यूटी है उसको रिस्टोर करने के लिए ग्राफ्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो ग्राफ्ट कैसे डालेंगे, हम परकुटेनियसली जो कैथेटर इंसर्ट करेंगे थ्रू द फीमोरल आर्टरी. ठीक है, कैथेटर इंसर्ट करेंगे और उसके थ्रू जो ग्राफ्ट विल ऑल्सो बी इंसर्टेड, और जब वो जाके वहाँ पे उसको डायलेशन को रिपेयर करने के बाद दैट ग्राफ्ट विल बी इम्प्लांटेड देयर, ताकि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे. देन क्योंकि हाइपरटेंशन और एक्सेसिव ब्लड प्रेशर में लीड टू डायलेशन, सो वी हैव टू प्रोवाइड द antihypertensive medications, जिसमें हाइड्रोलिज़िन और बीटा ब्लॉकर्स कैन बी गिवन. Then the second is the abdominal aortic aneurysm. It is actually similar to that the thoracic only, but जो areas affected हैं वो थोड़ा लोअर साइड को हो जाते हैं, मतलब द रीनल एरिया विल गेट अफेक्टेड. द मोस्ट कॉमन कॉज इज अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड मैन आर 4 times more affected than the women, and it is more prevalent in the elderly patient. Now in this the affected part, mostly affected part is the infrarenal area. That infrarenal aneurysms are more common. Infrarenal means, infra means below, and renal or related to kidney. So in this the renal it occurs below the renal arteries, and the risk factors may include genetic predisposition as well as smoking and hypertension. The pathophysiology is if there is some congenital weakness or congenital abnormality or trauma or disease of the artery, that will lead to the damage to the medial layer of the vessel, or the even intimal layer of the vessel may be damaged, and because of that there will be loss of elasticity, and which will lead to the formation of sac or the dilation. Then clinical manifestations, very few symptoms are actually seen in these type of patients. So there will be back or flank region pain, which is a classic symptom for the abdominal aortic aneurysm. This occurs because जो this sac है या जो aneurysm है, that is inserting or putting pressure over the nerves of the vertebrae. जैसे वो nerves को compress करेंगे, because of that compression of nerve there will be back or the flank region pain. ठीक है, and depending upon the location and size of aneurysm there will be other symptoms that may be abdominal pain, feeling of fullness or nausea.
ठीक है. These will be according to, these symptoms will arise according to the location and size of the aneurysm, and changing position may relieve the symptom for some time. क्योंकि जब प्रेशर अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हो, प्रेशर थोड़ा कम होगा, then pain the symptoms may get reduced. Okay. And then pulsating mass in the abdomen, because this is the this dilation of the abdominal aorta will be felt as a pulsating mass of when we do the physical examination. Okay, so this, and because of this abnormal pulsating mass felt, the patient may feel the heart is beating inside the abdomen when the patient will lie down because of that pressure. Then, if the abdominal aortic aneurysm is associated with some thrombus, then the major vessel may be occluded, and it will lead to the emboli formation in the distal vessels also, and which will lead to the distal occlusion. So दूर की जो छोटी वेसल्स हैं दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. ठीक है. देन सडन सिवियर सडन back flank or abdominal pain or a pulsating abdominal mass will be if is the patient is feeling, or we are getting the patient is feeling severe sudden back flank or abdominal pain, or we are getting pulsating abdominal mass, that means this is the indication that aneurysm may rupture at any time. ठीक है. मतलब बहुत जो एनेरिज्म है वो डायलेट हो गया अच्छे से, तो उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड है, तो दैट कैन रप्चर एनी टाइम. सो दिस इज़ अ एमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि अगर एनेरिज्म रप्चर हो जाता है तो सडन बीपी ड्रॉप हो जाएगा एंड द साइन ऑफ शॉक विल बी अपेयरिंग. देन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. So most important indication or the assessment is the pulsating mass felt in the middle or the upper abdominal. ठीक है. About 80% of aneurysm can be palpated. So we have to go for the other test, which is the duplex ultrasonography. Sorry. So we were here. A duplex ultrasonography or CT scan may be used for determining the size, length and location of the aneurysms. And aortography, that is the catheter is inserted in the the imaging of the aorta is taken. This is a surgical intervention. In this, the catheter inserted through the femoral artery, and the status and the dilation of the aorta is assessed over that area. Okay, then medical management, it will consist of the providing the antihypertensive drugs, because to manage the BP, if the BP will allow to rise, then it will lead to the rupture of aneurysms. Then surgical management. In surgical management, bypass graft will be inserted in the affected area. ठीक है. If the aneurysm is larger than 5 centimeter, then it requires surgery. ठीक है. And this will the surgery will be the endovascular grafting, which will involve the insertion of catheter through the femoral artery, and then and attaching the endograft to the affected area, या फिर stent graft prosthesis can be inserted. ठीक है. In this image you can see, in the first image the catheter is inserted through the leg artery, and the stent graft is released from the catheter, and when it is released, then slowly the catheter is removed, so that the endovascular stent graft may be placed in the vessel. So जो ब्लड फ्लो विल नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड, वो जो एक्सेसिव साइड पे प्लेक है वो वैसे रहेगा, वो डैमेज नहीं करेगा, दैट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम.
Then in endograft procedure, balloon catheter positions and opens the graft. ठीक है, बलून जो है वहाँ जाके ओपन करता है. देन इसमें दो चीज़ें हैं, या तो बलून से वो ओपन करेंगे एंड एंडोवेस्कुलर ग्राफ्ट लगा देंगे उसको मैनेज करने के लिए बाईपास को, या अदर मेथड है जो हमने पढ़ा कि स्टेंट ग्राफ्ट है, उसको प्लेस करेंगे और स्टेंट ओपन हो जाएगा. तो वो जो बलून से जो प्लेक है उसको रप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेंट अपने आप ही एक वे बना लेगा, बाईपास बना लेगा. ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू ओपन द बलून और वो जो प्लेक है वो रप्चर हो जाएगा. देन वी विल प्रोवाइड द एंडोवेस्कुलर ग्राफ्ट. Then nursing management, functional capacity of all the affected organs has to be assessed. ठीक है, सॉरी, हैज़ टू बी असेस टू नो कि कौन कौन से ऑर्गन और कितना अफेक्ट हो गए हैं. ठीक है, तो द साइंस ऑफ रप्चर विल इंक्लूड द सिवियर बैक और abdominal पेन. ठीक है, एंड इवन pulsatile mass will be felt very clearly. तो that has to be seen. Then post-op care, after this surgical intervention, the patient has to be provided supine position for the 6 hours, and after 2 hours of this surgical procedure, then we can provide the head elevation up to 45 degrees. Till 2 hours it should be properly, the patient should be placed in supine position. Then catheterization or bedpan or urinal may be provided, and then vital signs along with the Doppler assessment of peripheral pulses. So peripheral pulses has to be assessed with the help of Doppler. ठीक है, this vital signs and Doppler assessment has to be done every 15 minutes for 4 times, 15 मिनट 4 बार, and then 30 minute and 4 hourly assessment has to be done. Then catheterization site is assessed. This catheterization site is जो femoral artery से जो catheter insert हुआ था for the surgical procedure, that site has to be assessed ताकि वहाँ पे कोई swelling, bleeding या pain, hematoma कोई formation तो नहीं है. ठीक है, then notify the physician if there is the persistent coughing, sneezing, vomiting, or the high systolic blood pressure above the 180 mm of Ig, because these all can lead to the bleeding through the catheter, the surgical site. ठीक है, even hemorrhage can occur. एंड देन पेरेंटल न्यूट्रिशन इन केस ऑफ पुअर ओरल टॉलरेंस, अगर अच्छे से ओरली नहीं ले सकते और टॉलरेंस नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद द टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू द इंट्रावेनस रूट. थैंक यू.